श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्टा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर काञ्चीकलापरुचिरी लसन्मुकुटकुण्डल त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चित परमानन्दचिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्ममलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता। तदा जय जया रावो रष्टपुष्टिललौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुशङ्कर्वोऽप्यभूत् तद्भासंस्थितानां च देहगेदात्मविस्मृति दृष्टा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यं ब्रवी अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाशटाय पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तय शोभाय कलो पवित्रम् अघोगविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्य के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीनमार्ग कुमाराऊचु ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका स्त्रीष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता यदम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते पञ्चोग्रपाश्चल्लच्छद्दकारिण क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्याभिचारकारिण सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शटाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारद श्रोतस्मातेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्कर भिक्षुको वित्तवालङ्को तत्प्रिया धुन्धलिस्मृता स्ववाक्यस्तिपिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो आर्थकामस्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मा समारब्धा स्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोबुहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छत सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चान्तरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखादगृहं त्यक्ता वनं गता मध्याह्ने तृषितो जात इष्टडाङ्गं समोऽपि यावान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षिता
मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागत दृष्टा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयो तस्य निःश्वस्वन् संस्थितः पुरा यातिरुवाच कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभञ्जते महन्तं नैव गृह्यन्ति प्रीत्वा देवास्विजातय प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणस्त्यमुक्तिमिहागता दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्तति विना पाल्यते या मया धेनु सा वन्ध्या सर्वथा भवे यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यत्वमाश्रये यत्फलं मद्गृह्यातं तञ्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्ता स रुदोतेस्तत्पार्श्वं दुःखपीडिता तदा तस्य यतिश्चेति करुणाभूद्गरीयसी तद्भालरक्ष्यमालं च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चाद्विप्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रज्ञारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक्तं तु समासाद्य त्यज्य संसारवासनां शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्तते सगरो दुःखमवापाङ्ग पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणां स्वदग्रे शोकमूर्छिता पुत्रादिसुखिनो अयं सन्न्यासशुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्विता इति विप्राग्रहं दृष्टा प्राब्बवीत् स तपोधना चित्रकेतु गतः कष्टं विधिलेख विमार्जना न यास्यसि सुखं पुत्राध्यता देवः तोद्यम अतो हठेन युक्तोऽसि हार्तिन किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं तु भक्षये पत्न्या त्वं तत् पुत्रो भविष्यति सत्यशोचं दयादानम् एकं भक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मल एवमुक्ता ययो योगी विप्रस्तु गृहमागत पत्न्या पाणो फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भस्यादृभेणोदरविद्दिता स्वप्लभक्षं ततो शक्तिगृहकार्यं कथं भवेत् देवादधाटी व्रजेत् ग्रामे पलाये दर्ग्मणि कथं सुखवन्निषेधविवृस्तं कुक्षे कथ मृत्युसजेत् तिर्यक्चोदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतोदारणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं न नन्दा संहरेत्तदा सत्यशोचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्द्याया विद्वानारी सुखिनी चेति मे मति एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगनी तस्या तृतीयं स्वेच्छाय गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यानुजे करवाणि किं सा ब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतिता तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्परेश्च यते दास्यति बालकं षाण्मासिको मृते बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं शोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयधेन्वे त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तदा चरितं सर्वं तथैव स्त्रीभुवावत अथ कालेन स नारी प्रसूतां बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्य दुन्दली ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूद सुखमर्भक लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्वपे प्रचोदया ददो दानं द्विजादिभ्यो जातकर्म विदाय च गीतवधित्रघोषो भूतद्वारे मङ्गलं बहु
भर्तुरज्ञे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे ममम् अन्यस्तेन दीर्घुब्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्वशुश्च प्रसूतायामृतो बालस्तु वर्तते कामाकार्ये गृहे रक्ष सतेभं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चात साधेनु शुशुवेर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयं मादधे मत्वाश्चर्ये जना सर्वे निदृशार्थं समागता भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालप्रतुस्तस्तु देवरूपु इति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगत गोकर्णं तं सुतं दृष्टा गोकर्णनाम चाकरोत् यत्कालेन तो जातो तरुणो तनयो भुवो गोकर्णपण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखल स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षिकोदवर्धिता दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चोर सर्वजनद्वेषी परवेश्वप्रदीपका लालनायार्धकान् धृत्वा सद्यकूपेन यप्रिया हिंसकशस्त्रधारी च दीनादानप्रपीडिका चाण्डालभिर्तो नित्यं पाशहस्तस्वसङ्गत तेन विश्याकुसङ्गेन पित्यं पित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो ताड्ये पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोचेदनहीनो रुरोधः वन्ध्यतं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक कतिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्योपहेयत प्राणे त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तुम समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुत बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहक सुतः कस्य धनं कस्य स्नेवाज्वलनतेशिनं न चन्द्रस्य सुखं किञ्चिन् सुखं चक्रवर्तिनं सुखमस्ति विरक्तस्य मुरेकेन्तवन्दिनं मुज्जाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज त्ववाक्यं सुसमाकर्ण्य गन्तुकाम पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धपङ्गुरहं षट् कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धरदयानिधे गोकर्ण उवाच देहस्तिमांसरुधिरे भीमितं त्यजं त्वं जायासुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको बहुभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं निहाय यातो वनं निस्तिर्मतिगर्षष्टिवर्ष युक्तो हरेरनुनितं परिचर्यमासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः।